So the first question that we are going to do is this confirmation rate जो आपको last time on hold रखा था, तो ये करते हैं पहले. Make sure you go and read the question. तब तक on hold का flag निकालें. हो गया. Alright. So the question says हमारे पास में कुछ डेटा दिया है और दो टेबल्स हैं साइन अप्स और कंफर्मेशंस दो टेबल है हमारे पास एंड देयर सम डेटा प्रेजेंट एंड यूनिक आईडी जो है इट इज यूजर आईडी इज यूनिक आईडी इन द साइन अप्स एंड इन कंफर्मेशन यूनिक आईडी इज बेसिकली योर यूजर आईडी एंड द टाइम स्टैम्प. तो कब कंफर्मेशन आए दोनों मिला के प्राइमरी की बनते हैं. ओके यूजर आईडी जो है वो यूजर आईडी आपका कंफर्म साइन अप टेबल से आता है. आपको फाइंड आउट करना है कंफर्मेशन रेट क्या है. कंफर्मेशन रेट का मतलब है number of confirmed messages divided by total number of request confirmation messages. ठीक है. कंफर्मेशन जो है वो आपको इस टेबल में दिखेगा. तो जैसे कि यहाँ पर टाइम आउट है तो दिस इज नॉट कंफर्म, दिस इज कंफर्म, दिस इज कंफर्म, दिस इज कंफर्म एंड दिस इज कंफर्म. Okay, so we can see that the confirmation rate for each of the users are going to be differently. So confirmation rate for let's say user number 6, it is there's no transaction here for user number 6, so 0 is the confirmation rate. 7 के लिए चेक करेंगे तो 7 के जितने भी है वो सारे कंफर्म हो गए. ठीक है. 2 के लिए चेक करेंगे, 2 के लिए एक कंफर्म हुआ और एक टाइम आउट हुआ. Okay, so 0.5 is the confirmation rate for 2. All right, so what we have to do is first, figure out what is the confirmation rate for each of the users. Okay. Given this information, uh, the signups table is basically going to tell you total number of users we have. All right. So confirmation is not going to have all the users. So जितने भी users है वो सारे sign up table से आएंगे, so that we know how many users are present. Let's focus on this confirmation table and try to get what is the confirmation number, total number of confirmed and total number of timeout basically for each of the users that we have. Okay, so in order to do that हम लोग ग्रुप बाय करेंगे यूजर आईडी पे, तो हमें पता चल जाएगा कि हाउ मेनी आर कंफर्म फॉर 7, हाउ मेनी कंफर्म फॉर 3 and so on. So that will basically tell us how many are confirmed and how many are timeout. Okay, so let's try to get that. So get the confirmation count and the timeout count. So just select start from confirmation statement. तो कंफर्मेशन टेबल से हमें मिलने वाला है. आई वांट टू ग्रुप बाय द यूजर आईडी से हम लोग से ग्रुप बाय करें. तो व्हेन वी डू द ग्रुप बाय वी हैव टू गेट द यूजर आईडी हियर एंड देन वी आल्सो वांट टू नो व्हाट आर द वेरियस एक्शंस. ठीक है. तो लेट्स से केस स्टेटमेंट यूज करते हैं. केस व्हेन एक्शन इज इक्वल टू कंफर्म देन 1 else 0. This is going to give us confirmation count. Similarly, we can get the we have to do the sum of this so that we can get the confirmation count. Similarly, we can also get the timeout count. So timeout are not confirmed, not equal to this, then we just have to do sum. That's going to basically give, this is going to give you confirmation count, and this is going to give you not confirmation counts. Okay, so when we run this, we are going to get both the counts. End statement right here. And,
Okay, so we basically get so this user 3 has zero confirmation count and not confirmation count as 2. So वही यहाँ पर 100 दिखना चाहिए. So this user 3, yeah, so user 3 का count is 0, not confirmed count is 2. 7 का 3 है confirmation count और ये है और इसका 1 और 1 है. So all we have to do is we have to basically take sum of these two and divide by the confirmation count. So इस दोनों का count summation आएगा 2 divided by 2. So sorry, yeah, 0 divided by 2 बिकॉज हमको इसका दिस इन दोनों का सम डिवाइड करना है इस वैल्यू से. 0/2, 3/0, सॉरी 3/3 एंड यहाँ पर आएगा 1/2. so that is going to be the confirmation, basically that is going to give you the confirmation values that we need. Okay, so we can do that, or we can also do something like this here. यहाँ पर हमें इन सबका सम लेना है confirmation का. So we don't have to do this case statement fully. We can just do confirm is equal to. ठीक है, चलो इसको केस स्टेटमेंट में रखते हैं just to keep it simple. So this is the confirmation count and this is the not confirmation count. So total कितना आएगा? इन दोनों के बीच का टोटल अगर निकालना होगा तो फिर जिसको काउंट 1 कर देंगे तो हमको टोटल कितने हैं वो भी पता चल जाएगा. So we basically get the total. So we have to divide this number by this number, this number by this number. Okay? So let's do that. So we know that we have to divide these two. ये दोनों को डिवाइड करने की जरूरत है so that we can get the rate, confirmation rate. करेक्ट. confirmation rate का जो वैल्यू है नाम है कॉलम का वो ले लेते हैं यहाँ से. so this is the confirmation rate that we need. And then let's get rid of this. Okay, so these are the confirmation rates that we have. Okay, so these are the confirmation rates. Sorry, confirmation rates यहाँ पर आ गए. 3, 7 और 2 का confirmation rate आ गया. Now the problem is ये जो बाकी के यूजर्स है 6 है वो नहीं है प्रेजेंट यहाँ पर क्योंकि 6 is not present in the confirmation table. So what we have to do is we have to get first of all the users. In order to get all the users, we can just use this user table and multiple ways of solving this. We can just do this and after that uh, we can just check if it is not present then CT से भी solve कर सकते हैं या फिर we can just do a left join here. So left join करते हैं हम लोग user table के साथ, sign ups table के साथ. Sign ups left join the confirmation table. तो साइन अप्स को मैं नाम देता हूँ S और confirmations को नाम देता हूँ C. ठीक है. And we're just going to do group by on the sign up वाला. And this is just going to be S dot. Okay. Left join on S dot user ID is equal to confirmation dot user ID. So let's try to see what we get. Telling the statements. Okay. So we just got that. And finally, anything that is not present is going to be 0 here. Because for that, this sum is going to come out to be 0. Okay. Action is equal to, so there's no way that the action is going to be 1 for the ones which are not present. अगर मैं इसको यहाँ पर let's just check action कितना आता है. Don't need that actually. Yeah, I mean that's it. We just do a left join ताकि हमें ये वाला नंबर जाए जो नहीं है present. And that should give us the answer.
क्या होगा अभी क्या चल रहा है? लेफ्ट जॉइन कंफर्मेशन एस डॉट, ये कॉमा, so you got a wrong answer here. Confirmation rate for 7 is 0.33, for 8 is 0.5, for everyone else is 0. What is wrong here? Do we have to return in certain order? Any order is fine, but we have to round it to 2 decimals, I think. 2 decimals. So round the whole thing to 2 decimals. Round the whole thing to 2 decimals. Wrong answer, I think. Please tell it. So round कर देंगे, we'll get the same answer now. Okay, shadow submit. Okay, so all we have to do is go to a left join to get all the users that we have, and then confirmation count will basically come from the confirmation table that we have. Action is only present in uh, uh, confirmation table, so you get the action and try to equate it. If it is equal, then you get it. If it's not, then you don't get it. Okay, and that's all we had to do. Any questions? Any doubts? Yeah. So my question is like every time we need to that उसमें सम करने की जरूरत है क्या? मतलब एवरी टाइम मतलब सम से सिर्फ अपने को यही मिलेगा ना, काउंट ही मिलेगा ना उसमें से मतलब? हाँ, जीरो जो रहेगा तो कंफर्म रहेगा। जीरो रहेगा अच्छा। तो वो काउंट कर देगा ना 1 बोल के। अगर मैं इसको काउंट बोलता हूँ, एक एग्जांपल, इसको अगर काउंट बोलता हूँ तो वो जीरो की जगह पे 1 1 काउंट करेगा ना, उसमें सबका 1 1 काउंट आएगा। दिस होल थिंग इज गोइंग टू बी 1 1 only. So that's why we have to do solid. ओके। Count 1 is fine. ये count चलेगा. We have to do a summation. You can do a sum 1 also. It's going to be very same. Just like others are doing. Most of them will do the same thing, which is like now, but if statement, instead of using the instead of using the case, you can use the if statement also because it is better. और कुछ एवरेज वगैरह किया है, एवरेज भी कर सकते हैं। एवरेज इज बेसिकली द सेम थिंग व्हिच इज सम डिवाइडेड बाय काउंट, डायरेक्टली एवरेज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट दे ट्राइंग टू से इज to get this description that we have here, instead of doing a sum here, we can average and remove this part. That will also work. Average भी कर सकते हो। And instead of having this if case statement, you can just write this if statement. If this is true, then 1, else 0. This is also fine. Around that. If average दे देगा, second round दे देगा, same thing. Right. More questions, anyone? Yeah, go ahead. सर मैंने मेरा एक पुराना सॉल्यूशन भेजा है
लास्ट ईयर सॉल्व किया था ये क्वेश्चन। या सेम चलेगा नहीं मेरा, एवरेज किया है ना आपने, जो अभी थोड़ी देर पहले किया था average। हाँ सर। Yeah. All right, let's quickly check this particular example. Find all the valid email addresses. इसके लिए कुछ लगने वाला है आपको। You need that. Learn about the regex, regular expressions in SQL. Okay. So SQL में, if you want to match certain strings, you have to use something called as a regular expression. Now, regular expression is mainly used for pattern matching. Okay. अगर आपको pattern match करके पता करना है if this works or not. Okay. It's similar to the like that we have. जो like हमने यूज किया था, वो like का like has its own good things and bad things. Okay. First of all, like is not flexible, but it's much faster. एडवांस पैटर्न मैचिंग के लिए आपको रेगेक्स यूज करना पड़ता है, लाइक से एडवांस पैटर्न मैचिंग नहीं होता। ठीक है, तो द वे यू डू दैट इज बाय बेसिकली सेइंग नेम, लाइक के जगह पे रेगेक्स बोलना होता है। ओके, और रेगेक्स बोलने के बाद में यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। ऑलराइट, नाउ दिस रेगुलर एक्सप्रेशन हैज सम रूल्स इन इट। फॉर एग्जांपल, if you want to match certain things, if you just say star, that means you want to match everything. Okay, if you say plus, that means you want to match any string which has at least one character or more than that character. Okay, if you want to say dot, that means any single character can be matched here. Okay, so example के साथ में देखते हैं, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा. So what we have to do here is we are given some user information and there are some rules to tell whether this mail address is a valid mail address or not. Now the rules here are basically the name should always be starting with uh, तो प्रीफिक्स मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, सो स्टार्टिंग में उसका लेटर आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में उसका जो एट द रेट लीड कोड डॉट कॉम रहना चाहिए एंड में। तो एट द रेट के बाद में लीड कोड डॉट कॉम आना चाहिए, लीड कोड डॉट कॉम आना चाहिए, लीड कोड डॉट कॉम आना चाहिए। gmail.com इज एन इनवैलिड वन, तो यहाँ पर रिटर्न में नहीं करना है। तो वी हैव टू फिगर आउट व्हाट आर द वैलिड यूजर्स प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। सारे यूजर लेके आने के लिए वी कैन जस्ट सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूजर्स। It will give you all the users. So straightforward. Now it will give you all the users. Now what we have to do is we have to put a filter where name, okay, sorry, not name, email, mail, regex, SRE, okay, where uh, yeah, regular expression, okay, a regular expression. Mail is a regular expression and it matches with this particular thing. What is it? So it is saying the prefix must start with a letter. तो स्टार्ट करने के लिए लेटर से स्टार्ट करना। तो अगर आप रेगेक्स चेक करोगे तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, दिस कैरेट साइन मैचेस विद द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, मैचेस विद द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। डॉलर साइन मैचेस विद द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, तो क्या बोल रहे हैं वो लोग, बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग हैज टू बी प्रेजेंट फ्रॉम अ हैज टू बी प्रेजेंट as a what do you call that, character. Okay, so we just put caret here. Okay, and इसका मतलब beginning of the string has to be, okay, beginning of the string has to be between a to z. ये क्यों लिखा मैंने a to z ऐसे, मैं ABCD वगैरह भी लिख सकता हूँ वहां पे। so because अगर मैं इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में लिखता हूँ तो बोलता है ABC में से कोई भी एक मैच होना चाहिए। ओके, अगर मुझे बताना है कि लोअर के सारे मैच करने थे तो A-Z का मतलब ABCD, पूरा Z तक लिखने की जरूरत नहीं है, A या फिर Z के बीच में कुछ भी हो सकता है वो वैल्यू। ओके, सो स्टार्टिंग हैज टू बी ईदर ऑफ दिस कैरेक्टर। ओके, इसमें से कोई भी एक कैरेक्टर स्टार्ट कर सकता है। तो स्टार्ट हैज टू बी प्रेजेंट फ्रॉम वन ऑफ दिस कैरेक्टर्स। ऑलराइट, अगर मुझे बोलना है स्टार्ट हैज टू बी नंबर, तो स्टार्ट हैज टू बी एनीवे फ्रॉम 0 to 9।
if I want to say start cannot be an character or letter, then I can say start. ओके, स्टार्ट कैनॉट के लिए ये वाला एग्जांपल है. सो कर्ली ब्रैकेट में फिर से यहाँ पर दिस इज फॉर नॉट व्हेन यू पुट इट इन द स्क्वायर ब्रैकेट. सो नॉट एबीसी में से कोई. ओके, इट इट शुड नॉट बी एबीसी में से कोई भी. सो एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं. लेट्स ट्राई टू गेट दैट. तो स्टार्ट वाला मैच कर रहे हैं. तो स्टार्ट हैज टू मैच विथ ए टू जेड. कहाँ कहाँ पे मैच होगा? ये मैच होगा, 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 ये भी मैच होगा. ओके, ये मैच नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डॉट प्रेजेंट है. तो लेट्स सी दैट. तो डॉट नहीं है, बाकी सब आ गए यहाँ पे क्योंकि स्टार्ट जो है वो मैच हो गया विद अ लेटर. स्टार्ट जो है वो लेटर से मैच हो गया. अगर मैं बोलता हूँ नॉट अ लेटर तो वो डॉट वाला आ जाएगा. नॉट के लिए मुझे ऐसे लिखना है, बस स्टार्ट इज नॉट अ लेटर, नॉट एनी ऑफ दिस. तो व्हेन आई चेक दैट, वो मुझे डॉट वाला आंसर ला के देगा. ओके, बिकॉज everything else is a letter but only this is not a letter. So that is how you use not. Okay, so we want start to be starting with A to Z. Okay, that's okay. Alright. इसके बाद में उन्होंने बोला है that remaining parts. Alright, so जो बचा हुआ है, तो स्टार्ट का तो हो गया. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड में क्या चाहिए आपको. उसके बाद में हम लोग बीच में आते हैं तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स. ठीक है, एंड चेक करने के लिए हमें चाहिए डॉलर साइन. चलो तो डॉलर साइन डालते हैं यहाँ पर. तो वी वांट टू पुट समथिंग अबाउट द एंड. एंड में क्या आना चाहिए? एट द रेट लीड कोड, जैसे के वैसे आना चाहिए. ओके, डॉट कॉम, ये एंड में आना चाहिए. ओके, सो एट द रेट लीड कोड ये एंड में आना चाहिए. ये पूरा एक साथ इवैल्यूएट होगा रेगेट्स में. ठीक है, ये एट द रेट एंड, ये टोटल मैच होना चाहिए एंड में. सो लेट्स ट्राई टू गेट दैट. ठीक है, तो नाउ वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग बिकॉज उसने क्या किया, उसने बीच वाले लेटर्स चेक नहीं किए. उसने सिर्फ स्टार्टिंग वाला चेक किया, लेटर से स्टार्ट हो रहा है क्या, बाद में बीच वाला कुछ भी चेक नहीं किया. उसके बाद में इसने ये चेक कर दिया, सीधा एंड चेक किया. ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट रिड ऑफ दिस पार्ट एंड चेक ओनली द एंड. दोनों को मर्ज करेंगे हम लोग बाद में. तो इसने सारे क्या किया, जहां जहां पे leetcode.com से एंड हो रहा है वो सब कुछ लेके आ गया. leetcode.com, leetcode.com, leetcode.com. ओके, नाउ लेट्स पुट द स्टार्ट आल्सो बैक इन. ठीक है, ये स्टार्ट भी वापस आ गया. अभी क्या बोल रहे हैं वो लोग, दैट उसके बीच में, स्टार्ट और एंड के बीच में कुछ भी हो सकता है. कुछ भी का मतलब क्या है? इट कैन बी इधर अंडरस्कोर हो सकता है, पीरियड भी आ सकता है, डैश भी आ सकता है. ओके, इसमें से कुछ भी आ सकता है. बिकॉज कुछ भी आ सकता है, सो लेट्स ट्राई टू गेट ऑल ऑफ देम इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट. क्या क्या आ सकता है? सबसे पहले इट कैन बी अ लेटर. ओके, और के लिए ये वर्टिकल साइन है, यहाँ पर जाके चेक करेंगे. ये देखो, अल्टरनेट मैचिंग. ये मैच करो या फिर ये मैच करो या फिर ये मैच करो. दिस इज अल्टरनेट मैचिंग. P1, P2 और P2. P1 क्या है हमारा यहाँ पर इस केस में? तो इट कैन बी A to Z एनीथिंग. ओके, और इट कैन बी 0 to 9 एनीथिंग. ये भी चलेगा. ओके, ये भी चलेगा. ठीक है, और इट कैन बी अ अंडरस्कोर. इट कैन बी एन अंडरस्कोर, और इट कैन बी अ हाइफन, और इट कैन बी अ डॉट. इसमें से कोई भी चलेगा. ऑलराइट, इसमें से कोई भी चलेगा. ये जो वर्टिकल ब्रैकेट, वर्टिकल लाइन से सेपरेट किया हुआ है, उनमें से कोई भी चलेगा. हाउ मेनी टाइम्स डू यू वांट देम टू रिपीट? यू वांट देम टू बी प्रेजेंट एज मनी नंबर ऑफ टाइम्स पॉसिबल. तो यहाँ पर स्टार डाल दिया, मतलब या तो वो एक भी नहीं प्रेजेंट होगा, या फिर इनमें से जो भी प्रेजेंट होगी वो मल्टीपल टाइम्स भी प्रेजेंट हो सकता है. तो जैसे कि यहाँ पर स्टार्ट तो W से हो रहा है, उसके बाद में यहाँ पर मल्टीपल लेटर्स है. ठीक है, तो स्टार साइन से क्या होगा, मल्टीपल लेटर्स ये हो जाएंगे, कंपेयर हो जाएंगे. ऑलराइट, अगेन हियर आल्सो दिस इज गोइंग टू गेट इनवैलिड क्योंकि यहाँ पर शार्प आ गया, हैश साइन आ गया. तो हैश साइन आ गया तो यहाँ पर हैश साइन आपके लिस्ट में ही नहीं है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू गेट इवैलिडेटेड.
You are going to get this particular part. Now let's try to get this. So what we got here is लेकिन यहाँ बेला hyphen Winston is fine. Tally.com@LeetCode is fine. बेला hyphen क्यों नहीं आया क्योंकि hyphen को तो यहाँ पे डाला था हमने और hyphen को क्यों नहीं डाला? लिखते हैं that was strange. Hyphen अगर मैं यहाँ लिखते हैं तो doesn't match I guess. So ये हाइफन अगर मैच करना है तो आपको सबसे लास्ट में लिखना पड़ेगा. That was something that I didn't know. ठीक है, अगर हाइफन मैच करना है तो सबसे लास्ट में लिखना है. यहाँ पर कहीं लिखा होगा वो तो चेक करते हैं. हाइफन मैच करना चाहिए तो it's not written anywhere but anyways हाइफन आपको सबसे लास्ट में लिखना पड़ेगा because what is happening here is आपने 0 to 9 लिख दिया ना, उसके बाद में अगर आपने फिर से हाइफन लिख दिया you can add more stuff there. So that's why I think that is the reason why you can have to add hyphen at the end. Okay. फिर स्टार का मतलब है कितने भी मैच हो सकते हैं. Alright. Now let's try to run this. It will give you all the filtered ones based on what the conditions are. Now if you take a look at this, स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी चीज है वो एग्जैक्टली इवेल्यूट होते हैं जैसे कि ये डॉट जो है. ओके, डॉट का मतलब होता है कि डॉट अवेलेबल होगा तो चलेगा. जैसे कि सैली डॉट जो है इट इज करेक्ट. ओके, अगर आपने डॉट ऐसे नॉर्मल लिख दिया तो इट हैज अ मीनिंग इन रेगेक्स. इट मींस एनी कैरेक्टर. करेक्ट, इसीलिए उसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा आपने, क्योंकि डॉट हैज अ मीनिंग. डॉट मतलब एनी सिंगल कैरेक्टर. तो यहाँ पर जो है ये जो डॉट लिखा हुआ है, अगर हमारा कोई केस ऐसा रहा जहाँ पे समथिंग इज लाइक दिस @leet कोड 9 कॉम ऐसे लिख के रहा, तो ये जो 9 है ये मैच हो जाएगा डॉट के साथ बिकॉज इट मींस एनी कैरेक्टर. ओके, सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन. दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट इट इन अ स्क्वायर ब्रैकेट लाइक दिस. ये एग्जैक्ट वैल्यू मैच करें. Don't match it with any character, but it is not a regex anymore. It is basically a character match that I want to do. Okay. So that's what we have to do. रेगुलर एक्सप्रेशन थोड़ा सा टाइम लगता है रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ने के लिए. आई थिंक जब आप ये क्वेश्चन करोगे मल्टीपल टाइम्स तब आप इसको रिफर कर करके यू कैन ट्राई आउट वेरियस थिंग्स एंड दिस क्वेश्चन इज अ गुड एग्जांपल टू ट्राई आउट रेगेक्स. एक ही क्वेश्चन करो रेगेक्स का लेकिन अलग अलग चीजें ट्राई करो. मे बी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग अदर मेथड्स. और साइन लिखने की जरूरत नहीं है. दे आर सेइंग दैट यू कैन जस्ट पुट इट लाइक दिस. एस्केप करना है तो फिर आप सिंगल स्लैश डाल सकते हो एस्केप करने के लिए, बट आई फाइंड दैट मेथड दैट वी रोट मच क्लीनर. सब जगह पे रेगेक्स यूज करेंगे. But or sign is much cleaner, so that's why I'm just putting it like that. So this basically means आपको और लिखने की जरूरत नहीं है. A to Z कोई भी चलेगा, A to capital Z कोई भी चलेगा, 0 to 9 कोई भी चलेगा. So what they're trying to say is ये जो कोड लिखा है हमने इसमें ये और वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है. Just this is automatically getting odd. This is fine too, but anyways, let's just keep this sign because इससे पता चलता है कि हमें we have to do or thing, right? So A or Z or dismiss or much easier to read. Questions anyone?
दैट कंक्लूड्स आवर ऑल द सीक्वल क्वेश्चंस। रिविजिट करना है, रिकॉर्डिंग सारे के सारे शेयर किए हैं, और कुछ भी समझ में नहीं आता तो रिकॉर्डिंग्स में सीक्वेंस भी दिया हुआ है, जिस सीक्वेंस हमने फॉलो किया है। मेक श्योर यू गो बैक, रिविजिट, डू दिस मल्टीपल टाइम्स। ये जो पूरी लिस्ट है ये आपको, इसके क्वेश्चन इनफैक्ट याद ही हो जाने चाहिए। ट्राई टू गेट टू दैट लेवल। यू कैन डू मोर क्वेश्चंस आउटसाइड ऑफ दिस, बट आई वुड सजेस्ट पहले ये 2-3 बार करो, उसके बाद में अगर टाइम बचता है देन यू कैन ट्राई मोर क्वेश्चंस, बट फर्स्ट मेक श्योर यू मास्टर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर प्रेजेंट हियर। ओके, इसमें अलग अलग पैटर्न से अलग अलग चीजें कवर होते हैं, एंड दैट विल मेक श्योर यू आर कवरिंग एवरीथिंग। सारे क्वेश्चंस कवर किए ही है। होमवर्क दिए हुए क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व नहीं किए होंगे तो सॉल्व कर लो जितने जल्दी हो सके, ताकि खुद के सारे सॉल्व हो जाए। also solved because होमवर्क दिया है तो इसके बारे में बात हो गई है, इसके बारे में बात हुई है, सबको मैंने फ्लैग कर दिया। ठीक है, आई थिंक दिस शुड बी गुड। ऑलराइट, सो सारे क्वेश्चंस हो गए सीक्वल के। नाउ लेट्स जंप। रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ मैं, और ये रिकॉर्डिंग उसमें ऐड कर दूंगा। स्टार्ट करने